तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्यः वन्देऽहं गुरुशीलपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं भावजातं सागरनाथान्तं तं सागरं जागरूकं भजनचेतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरवरदात्रीशागाञ्जां नमामि कृष्णपृष्ठाय तले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी वजाय निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकाल जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु वज्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टि कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। So welcome to all the devotees for the today's session. Hope आपका एग्जाम अच्छा हो गया है ना। अभी सब थके हुए हैं लेकिन फिर भी आप लोग सभी आ गए आज। लेट्स हमारा पिछले चैप्टर का महत्वपूर्ण श्लोक बोलेंगे। एते चांस कलह भुंसा, एवरीबॉडी कैन रिपीट। एते चांस कलह भुंसा, कृष्ण भगवान स्वयं व्याकुलं लोकम् युगे युगे। उसका अगला श्लोक इम्पोर्टेंट है। जन्म गुह्यं भगवतो तत्प्रयतो नरः सायं प्रातन्तं भक्त्या दुःखग्रामातिमुच्यते। So last time we discussed that. Now henceforward, if you see in this all entire list of incarnation, there is no mention of Vishwarup Darshan. Sorry, Virat Rup. What Rup? Virat Rup. That is not given here. So what is that exactly is Virat Rup? Why it is in the Bhagavatam? Because it comes in second canto. Why this is not mentioned in the list of the Avatara? So this next 5 to 6 verses, Sukdev Goswami will explain about this Virat Rupa conception. Correct? So now we'll start. 30 shloka. Etad rupam bhagavato. Etad rupam bhagavato. Yarupasya chidatmana. Yarupasya chidatmana. Maya guner virachitam. Maya guner virachitam. Mahadadi viratmani. Mahadadi viratmani. So devotees can read the translation. Translation: the conception of the Virat, universal form of the Lord, as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and
neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form. But factually, the Lord has no material form. Which translation? So what is mentioned here, you see. So now the Prabhupada says that the Virat Rupa is not explained in the Avatara list because it is not a spiritual. It is a material. It is a conception on the Lord, which is material. And therefore, but why this is required? Because the neophyte people who are attached to the body, they can't understand the eternal form of the Lord. उनके लिए ऐसा कोई तो बड़ा चीज है, अरे भगवान मतलब, इसलिए आप देखेंगे जो अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक मतलब जो कहां से चालू है, जेरूसलेम, उनका कंसेप्शन भगवान का कैसा होता है, पर्वत भगवान, आकाश भगवान, कोई तो बड़ा पेड़ भगवान, अग्नि भगवान, फायर भगवान, because they want a big thing. So this विश्वरूप is also कि भगवान का जंघा ये है, ये विश्वरूप का सिर, भगवान का सिर, ऐसा सब पाताल मूदम ऐसा आता है सेकंड कैंटो में, भगवान के चरण ये है, पाताल लोक, सुतर लोक, तो फिर लोग भगवान कोई तो बड़ी चीज है. But actually this is a material, because they don't have love for Krishna, they don't have love for God, they don't understand that God is a person. उनको क्या लगता है God चमत्कार शिवाय नमस्कार नहीं, means something big means God. ये भौतिक कंसेप्शन है. So this is called as a भौतिक कंसेप्शन. Prabhuji, so Prabhupada Vishwaroop, is it the same as Virat? Vishwaroop? No, Vishwaroop Darshan Yoga in Bhagavad Gita are different. That is a spiritual, because Lord Krishna showed that to Arjuna. But here, this Virat Rupa is for the yogis. They will imagine this material universe as a God. Patala Mule, this is a second canto, everything is given. कि how ये भगवान का, बट इवन आई थिंक मुझे देखना पड़ेगा कि भगवद गीता में प्रभुपाद जी बोलते कि ये भी मटेरियल रूप है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई विराट रूप कोई ये नहीं है. देयर इज नो प्लैनेट ऑफ द विराट विश्व रूप आल्सो इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बट आई हैव टू कंफर्म बिकॉज द सेम फॉर्म वाज शोन बाय लॉर्ड चैतन्य टू अद्वैताचार्य इन चेतन चेतामृत. इट इज मेंशन अद्वैताचार्य वांटेड टू सी व्हाट अर्जुन सॉ. इससे मुझे कुछ परपट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. लेकिन ये जो विराट रूप है ये तो मटेरियल है टोटली. दिस इज टोटली मटेरियल, ठीक है. हाँ, सूर्यकांत कृष्ण. Prabhuji, as per my understanding, Vishwaroop is with the Krishna show to Arjuna, it is spiritual, but it is manufactured only for material world temporary form. Correct. क्योंकि परमात्मा is also spiritual, but it is a temporary in the material world. Because in the spiritual world there is no Paramatma. Yeah. फिर भी मुझे एक बार पढ़ने दो. बट ये जो बोला गया है ये न्यूफाइड योगी, because he has to meditate, so he will meditate that the upper planetary system is like a head of the Lord, the lower planetary systems are the legs of the Lord, like that he will meditate. Okay, ठीक है. Now next shlokas is clarified. यथा नभसि मेघागो 31. रेणुर्वा पार्थिवो निले, रेणुर्वा पार्थिवो निले, एवं दृष्टा दृश्यत्वम्, एवं दृष्टम् आरोपितम् अबुद्धिः. आरोपितम् अबुद्धिः. No, this will explain very nicely. Somebody can read the translation. Clouds and dust are carried by the air, but less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conceptions on the spirit self. तो देखिए इसमें क्लियर कर देना कि clouds and dust are carried by air, but less intelligent person that the sky is cloudy.
but sky is not even seen only. We are not able to see the sky also. What to speak of cloudy? We say that it is a blue means, but no, that is a blue is a different color, but sky is beyond it. You can't see only. We can't see the subtle thing. For example, if I ask a question, where is the mind? Who can tell where is the mind in the body? Where is the intelligence in the body? Where is the intelligence in the body? Somebody can say this is intelligence. No, this is the brain. This is not intelligence. Intelligence, mind, and ego, they are subtle. They are spread throughout the body. Mind is spread throughout the body. The intelligence is spread throughout the body. You can't point out with the intelligence. You can't see only, it is a subtle. Similarly, sky is more subtle. Ether, more subtle. Ether is more subtle. So you can't see. But आरोपितः, this word is important. आरोप करना, किसी पे आरोप करना, ये सच नहीं तो क्या आरोप कर रहे हैं उसके ऊपर. उसी तरह से ये भगवान के ऊपर आरोप है. सीधा स्वामी एक्सप्लेन करते कि ये विराट दर्शन क्या है, भगवान के ऊपर ये आरोप है, ये सच में नहीं है. तो प्रभुपाद जी परबट में एग्जांपल अच्छे देते हैं. हाँ, ये एक to understand the layman, Prabhupada says a car and a president. क्या हो रहा है? Construction sound is coming. हाँ, एक मिनट, मुझे हेडफोन डालने पड़ेगा, मुझे पसंद है. एक मिनट, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. एक मिनट, इनको भी अभी करना था. जस्ट गिव मी 1 मिनट. जस्ट 1 मिनट. So, Prabhupada gives the example of a car and a president. If sometimes president is sitting in the car and the car moves, so people say president is going. But president is not going, the car is moving. But they are, ये लेमैन को समझने के लिए. वैसे ही है विराट दर्शन का, ऐसे प्रभुपाद जी परपट में समझाते. ठीक. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ Prabhuji, query might be a silly query. Prabhuji, as we have given exam where we have, you have taught the Paramatma feature and all those things. But Prabhuji, what is the difference between Jiva and Virata Roop? If Virata Roop is not, if it is a material form, then will it have a Paramatma resides within? I'm quite confused, Prabhuji, in all these concepts now. I'm trying to forget what I have learned. एक मिनट, 1 सेकंड. आपका क्वेश्चन है कि विराट रूप के अंदर परमात्मा है क्या? मतलब जीवा और विराट रूप में क्या फर्क है? जीव, नॉर्मल जीव एंड विराट रूप. The sound is not coming. Prabhuji cannot hear you. किसी ने अनम्यूट किया. हाँ, तो देखिए नॉर्मल जीवात्मा और भगवान में क्या डिफरेंस हमको पता चल गया. ठीक है, आपका हेडफोन है क्या इसका? ठीक है, साउंड आ रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का साउंड है हेडफोन में. नहीं, हेडफोन से फिर आपको बोलने का दिक्कत है. हाँ ठीक है, ये से कनेक्ट होता है, वो चलता है क्या? ठीक है. तो देखिए नो छोटा. तो अभी भौतिक प्रकृति एंड जीवात्मा दोनों में डिफरेंस है. करेक्ट. जीवात्मा और भगवान दोनों सच्चिदानंद है, भौतिक प्रकृति नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी भौतिक प्रकृति हमसे बहुत बड़ी है क्योंकि वो भगवान की शक्ति माया शक्ति है. अभी विराट रूप और जीव का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये विराट रूप इमेजिनरी है. ये क्या है? इमेजिनरी है. सो व्हाई वी हैव टू कंपेयर द जीवात्मा विद विराट रूप. कंपैरिजन का प्रश्न आता नहीं क्योंकि विराट रूप तो मटेरियल है, जीवात्मा तो सच्चिदानंद है ना. जैसे कोई ड्रीम देख रहा है, ड्रीम इज नॉट रियल. ड्रीम रियल है नहीं ना. लेकिन भगवान रियल है.
भगवान रियल है। तो विराट रूप जस्ट एक कंसेप्शन है। ये क्या है? कंसेप्शन। किसके ऊपर? ये पूरा जो यूनिवर्स है, इसमें वो भगवान को आरोप कर रहे, भगवान को इमेजिन कर रहे। लेकिन भगवान जिसको इमेजिन कर रहे भगवान वो रियल है, लेकिन जिसमें इमेजिन कर रहे वो सही नहीं है। इसलिए जीवात्मा का उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। जीवात्मा तो सच्चिदानंद है। क्या है? सच्चिदानंद है। उसका इसका रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाँ, यस यस, गॉट इट। सो जीवात्मा सच्चिदानंद है, दिस इज कंफर्म। परंतु ये जो योगी लोग हैं, तो इनका इमेजिनेशन है क्या ये विराट रूप, जैसे आपने बताया? वही तो बोल रहा हूँ, नियोपाइट योगी, इम्पर्सनलिस्ट योगी। वो हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये दीज पीपल आर एनवियस अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड। वो भगवान के सच्चिदानंद रूप से वो एनवी करते, इसलिए तो इम्पर्सनलिस्ट हो गए। लेकिन उनको वापस भगवान ने एक चांस दिए, बाबा ठीक है पहले तो इस पे मेडिटेट कर। तो धीरे धीरे जब वो मेडिटेट करेगा, किसी भगवान के महान भक्त के टच में आएगा, तब उसको भगवान के पर्सनल फॉर्म का उपदेश मिलेगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी स्वयं चतुष कुमार, वो निर्विकार है, लेकिन जब वो नारद मुनि के टच में आए, जय विजय के टच में आए, व्यासदेव के टच में आए, तो भगवान के बारे में सुन के अट्रैक्ट हो। ऐसे अभी भी बहुत योगी है, हमने देखे नहीं है। ठीक है, ऐसे हिमालय में ऐसे लोग बैठे हैं 1500 साल, 2000 साल से बैठे। उनमें शक्ति है, क्योंकि उन्होंने भौतिक तत्वों पे कंट्रोल कर लिया। भौतिक तत्वों पे क्या कर लिया? कंट्रोल। ठीक है, नाउ दिस श्लोक आपको बताया मैंने ना कि 31 श्लोक आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। प्रभुपाद जी ने उसमें कार का एग्जांपल दिया, पेशेंट का एग्जांपल दिया, है ना। सेम प्रभुपाद जी बोलते हैं, although the bluish tint of the sky and sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue, but that is a general conception for the layman only. It is for the layman only, है ना, नियोपाइट। अभी और एक एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ अदृष्ट्वा सुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। अर्थ पढ़ी, मीनिंग। Clouds and dust are carried by the air, but less intelligent persons say that sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conceptions on the spirit self. आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है क्या? यस यस भैया। हाँ ठीक है, अभी आपको डिस्टर्बेंस आएंगे नहीं, है ना? नहीं आ रहा है ना? साउंड इज क्लियर ना? हरे कृष्णा, साउंड इज क्लियर? Beyond this gross conception of the form is another subtle conception of form, which is without the formal shape and unseen, unheard and unfelt. The living being has his form beyond this subtle, otherwise how he... So now they are comparing to Jivatma also, because it is mentioned that we are thinking this body is we, but we are not the body. Beyond this gross body, there is a subtle body. There is a subtle body. And beyond the subtle body is the Atma. Otherwise, how this body can have repeated birth? Only the Atma can have repeated birth. जैसे भगवान का भी ये जो विराट रूप के परे एक सच्चिदानंद रूप है, ये तो इमेजिनेशन है। उसी तरह से जो जीवात्मा है वो भी सच्चिदानंद है। This gross body is not जीवात्मा. जीवात्मा is something beyond this gross body. That is explained by Prabhupada in the purport 32 का purport, है ना। Both the Lord and the living beings are eternal. यही इस purport में क्लियर किया है। What the conclusion is that the Lord is eternally existence in the transcendental form. इसका second paragraph पढ़िए आप, है ना। Which is neither gross nor subtle like that of a living being. His body is never to be compared to the gross and subtle bodies of the living being. All such conceptions of the God's body are imaginary. The living beings has its eternal spiritual form, which is conditioned only by his material contamination. Clear? So both living entity
क्योंकि ISKCON, after coming to ISKCON, everybody know that we are not body, we are the soul. But people can't understand this simple truth that you are not body, you are the soul. Big philosopher. So therefore, this section is there. They are giving so many logical reasons how Jivatma is not the body. Because we have heard this from the great soul, we are very easy, we are able to understand very easily. But big people can't understand the science of soul. Ascharyavat paschati tathaiva chanyam. Bhagavad Gita, 2nd chapter, the sloka is that the people understand the soul very wonderful. They think the soul is wonderful. They can't understand how the soul is wonderful. तो इसलिए एग्जाम्पल बता. बट हमें क्या है कि परंपरा से मिला तो पता है हमको पता है. बट ये अभी सिद्धांत में यहाँ पे पता है, तो वो हमको समझना थोड़ा मुश्किल जा रहा है. नेक्स्ट श्लोका. यत्र में सदसद्रूपे, एवरीबॉडी, यत्र में सदसद्रूपे, यत्र में सदसद्रूपे प्रतिद्विशेष संविदा अविद्यायात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम. इसका अर्थ पढ़िए. Whenever a person experiences by self-realization that the gross and the subtle bodies have nothing to do with the pure self, at the time he sees himself as well as the Lord. And now, when some person by deliberation understand by self-realization that both the gross and subtle bodies have nothing to do with the pure self, at that time he can realize both the Lord and himself. The Lord and himself. Brahma darshanam. Self-realization. So Prabhupada explained that the difference between the self-realization and the material illusion is to know that the temporary or illusory impositions of the material energy in the shape of gross and subtle bodies are superficial covering of the self. And Prabhupada said this is only possible, this self-realization is only possible, but not by any artificial means. And there are so many people who give seminar, self-realization, go beyond higher dimension. So much business is going on. But this is all theoretical. This is all theoretical. Prabhupada says this is not possible by artificial means, but under the lotus feet of the Guru, who is always transcendental. In the Bhagavad Gita, the Lord says that He is present in everyone's heart, and for Him only all knowledge, remembrance, forgetfulness take place. So, tad vidhi pranipatena pariprasthane sevaya upadekshantite jnanam jnaninas tattvadarshina. Just discussion करके आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होने वाला है ना. स्पेकुलेशन करके. एक बार मलेशिया में मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो एक इंडियन व्यक्ति मिला मुझे, नॉर्थ इंडिया का. उसको मैंने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान का बुक दिया और डिस्कशन करने लगा. तो क्या बोला कि देखो मुझे सर्च को एंड नहीं करना है. मेरे जो सर्च है उसको अगर मैं एंड करूंगा तो मेरा समाप्त हो जाएगा, वो कंटिन्यू चालू रहेगा. बोला ठीक है करते रहे, ये बुक लेके जाओ. मेंटल स्पेकुलेटर इतना आर्ग्यूमेंट कर रहा था. अरे बाप, ऐसे ही हार्ड रहते हैं लोग, हार्ड बुद्धिमान लोग. बोले नहीं सर्च को एंड कैसे कर सकते, सर्च कंटिन्यूस होना चाहिए. मतलब करते रहो बड़ी बुक लेते रहो, पढ़ो उसको. तो भगवान मैंने ज्यादा डिस्कशन ही नहीं किया. बोला ये इसका डिस्कशन करके नो यूज. इफ ही रीड्स Prabhupada book, Prabhupada will give nice thrashing and mercy also, he will get benefited. So such people are there actually. हमें पता नहीं है. बोले चलो अपन विमर्शनम करेंगे, वाद विवाद करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे और आपको पागल कर देंगे. नॉर्थ में तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, वाराणसी ऐसी जगह में बहुत जबरदस्त लोग रहते हैं. आप उनके सामने खड़े नहीं, ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे कि गुम हो जाएंगे, गुम. But it is only possible by the mercy of the pure devotee. Only possible by the mercy of the pure devotee, by serving. That's all. ये प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोलते. ठीक है. तो ससंविदा, सीधा समय बोलते कि ससंविदा मतलब श्रवण मनन. भगवान के बारे में श्रवण गुरु से और उसका मनन करने से ही ब्रह्म दर्शन मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिल सकता. नाउ विल गो टू 34.
यद्देशोपरता देवी देवी माया वैशारदीमतिः माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेति विदुर संपन्ने एवति विदुर महिम्नि स्वे महायते महीयते महिम्नि विंडो खोल दिया लाइट गया है डोर हाँ सो मीनिंग पढ़िए मीनिंग Translation. कोई पढ़ रहा है ट्रांसलेशन? You can read. Prabhu, actually there is some problem with the connection, so I don't know which sloka to read now. Okay, this is the 34. Just a second. Thus, the Lord of the universe maintains all planets inhabited by demigods, men, and lower animals, assuming the role of incarnation. He performed pastime to reclaim those in the mode of pure goodness. So when the soul will be situated This was not the translation, I believe. If the illusory energy subsides. 34th, no? 34th का पढ़ना है हमें. If the illusory energy subsides and the living entity becomes fully enriched with the knowledge by the grace of the Lord, then he becomes at once enlightened with the self-realization and thus becomes situated in his own glory. है ना? हम सबको ट्रैक पे रहना पड़ेगा. तो the living entity can be situated in his own glory. How? By the grace of the Lord. When he is given the bhakti, then only he can be situated in his own glory. Yatmasu prasidati. या समय पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अदोक्षते हेतु की अप्रत्ययता यात्मासु. So Prabhupada says that external energy is the servant of Krishna, and the external energy can act in both ways. He gives example of electrical energy. It can be acted for heating or making cooling, both. So similarly, when the Lord bestows his mercy, the same external energy will become the internal energy. By the mercy of the Lord, Jivatma can understand both things, and his real glory. We are not understood our real glory. Our real glory is as a servant of God. We are thinking that I am limited here. I am this, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये शॉर्टकमिंग है, मैं ऐसा हूं. नहीं, जीवात्मा बहुत ग्लोरियस कब होता है, और वो ग्लोरियस है जब वो भगवान की सेवा को स्वीकार करता है, सबसे ग्लोरियस बन जाता है. जैसे नारद मुनि, जो नारद बॉय थे, और जब वो नारद मुनि बने तो कहाँ ट्रेवलिंग कर सकते? ऑल ओवर ब्रह्मांड ही कैन ट्रेवल, एंड he is happy and he is making millions of people happy. All the great devotees, they are fully happy. ऐसा नहीं कि वो आर्टिफिशियल ड्रामा कर रहे हैं. No, till the point we are not situated in the devotional service, we will always remain miserable. Ye atmasu prasidat. So we have not even understood our own potential. Only by the grace of Guru and the grace of Krishna only. जैसे तो प्रभुपाद के शिष्य हैं, जिन्होंने केवल कभी बुक पढ़ा था, मैगजीन पढ़ा था, उनको प्रभुपाद जी ने एडिटर बना दिया, और वो बड़े बड़े मैगजीन लिख के प्रभुपाद की बुक्स लिख रहे. ये कैसे पॉसिबल था? गुरु का ग्रेस और भगवान की कृपा. ये आत्मासु प्रसिद्ध. Actually, otherwise it is not possible. Otherwise it is not possible. Clear? So, Srila Sukadeva Swami क्या बोलते कि
अभी माया तो हमेशा रहती है, फिर जीव का उपाधिरहित होने के बाद भी फिर मोक्ष कैसे होगा, यह संदेह हो सकता है। इसलिए यह श्लोक है, क्योंकि कोई बोलेगा भाई जीवात्मा आत्मा साक्षात्कार हो गया, लेकिन माया शक्ति तो एज इट इज है ना, लेकिन वो जीवात्मा को हानि करेंगे नहीं, क्योंकि वो बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वो अभी पॉजिटिव बन जाएंगे, जैसे कूलिंग एनर्जी बिकम्स हीटिंग एनर्जी। सिमिलरली भले माया है, लेकिन जीवात्मा उपाधि रहित मीन्स आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नथिंग टू डू, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, दैट इज उपाधि रहित। और जिस समय हम ये बन जाएंगे, ये आत्मासु प्रसिद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये आत्मासु प्रसिद्धति। बिकॉज हर एक व्यक्ति वो चाहता है, लेकिन होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसको एक पिंच होती है, पिंच। ठीक है। 35 एवं जन्मनि कर्माणि यकर्तुर्जनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि युक्पते। हाँ, तो अर्थ पढ़िए। Hare Krishna. Translation. Thus, learned men describe the birth and the activities of the unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literature. He is the Lord of the heart. Just 1 minute. अभी जीव का जन्म और मृत्यु तो माया है, लेकिन क्या भगवान का भी जन्म मृत्यु माया है? तो ये एक्सप्लेन करने के लिए क्लियर कट कर दिया। जैसे अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जीवात्मा पर भगवान के बारे में बता रहे, लेकिन जीव का जन्म मृत्यु तो माया है ना। लेकिन thus the learned man describe the births and activities of the unborn and inactive, which is undiscoverable even in the Vedic literature. He is the Lord of the heart. बट उनका जन्म मृत्यु ये भौतिक नहीं है। हमको पता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वदा त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नैति मामेति सोजुना। जीवात्मा का जन्म मृत्यु माया है, लेकिन भगवान तो मायातीत है। उनका तो जन्म कर्म आविर्भाव तिर्भाव सब कुछ क्या है? गुणातीत है, वर्णनीय है, श्रवणीय है। यह सीधा स्वामी बताते हैं, और वही तो हम कर रहे। पूरा भागवतम क्या है? पूरा भागवतम वही है कि भगवान के बारे में सुनो। केवल भगवान के बारे में सुनने से, हमने श्लोक पढ़ा ना अभी, कौन सा? एतद है ना, जन्म गुह्यम भगवतो, लास्ट अभी हमने श्लोक पढ़ा, सायन प्रातन गुणन भक्त्या दुख गामा विमुच्यते। जब भगवान का आविर्भाव तिरोभाव उनके एक्टिविटी सुनने से हमारा दुख चला जा रहा है। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि भगवान का जन्म कर्म ये माया अधीन है? नहीं, भगवान तो ये सब क्यों कर रहे हैं? जीवेर कारण है लीला कोइलो सुविस्तार। गोपीनाथ मम दीमे दाना शूनो निशाय दुर्जाना सदा कामरात किछु नाई मोर गुना। जीवेर कारण है कि भगवान लीला क्यों करते हैं? जीव का उद्धार करने। लीला कोइलो सुविस्तार, ये यहाँ पे बताया। 36 सवा इदं विश्वम अमोघ लीला सुजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। हाँ, अर्थ पढ़िए। अर्थ The Lord, whose activities are always spotless,
is the master of the 6 senses and is fully omnipotent with 6 opulences. He creates the manifested universes, maintains them and annihilates them without being in the least affected. He is within every living being and is always independent. हाँ, तो सीधा समय बोलते कि बाबा ये श्लोक क्यों आया है? अगर भगवान और जीव के जन्म में मायादी होते तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या इस श्लोक में बताया कि भगवान का एक्टिविटी हमेशा स्पॉटलेस है, वो सभी सेंसेस के मास्टर है, ओमनीपोटेंट है. वी आर बीइंग क्रिएटेड, लॉर्ड इज क्रिएटर. Prabhupada says that the prime difference between the Lord and the living entity is that the Lord is the creator and the living entities are being created. Therefore, he is called Amoga Leela, which indicates that there is nothing lamentable in his creation. Those who create disturbance in creation are themselves disturbed. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया, हाँ, भगवान इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए वो अबाधित है. जैसे आप कोई ऑर्डर स्मेल कर रहे हो दूर से, लेकिन आपका उससे कोई संबंध नहीं है, उसी तरह से भगवान इस भौतिक जगत में होते हुए भी भौतिक जगत से अबाधित है, मायातीत है, माया स्पर्शित नहीं है. जैसे शिव जी ब्रह्मा जी के माया स्पर्शित है, लेकिन भगवान नहीं है, माया उनके बाजू में है, बट जीवात्मा माया के अधीन है. इसलिए भगवान की लीला क्या अमोघ दृक है, हमारी नहीं है. हाँ, शुद्ध भक्तों का जन्म और उनका आविर्भाव तिरोभाव भी क्या मायातीत है, और इसलिए उसका भी हम श्रवण करते ना, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान में क्वालिटेटिव डिफरेंस होता नहीं है, केवल क्वांटिटी होता है. तो भगवान और उनके भक्त दोनों का जन्म, ये जन्म कर्म ये सब गुह्य है, और वो सुन के हमारा कल्याण होने वाला है, और ये अगले नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है. ठीक है. 37 न प्रश्न है. हाँ. न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुर निपुणेन धातुर एवेति जन्तु कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तवन्तो नटचर्याभिवाज्ञः. हाँ, अर्थ पढ़ी. The foolish with a poor kind of knowledge cannot know the transcendental nature of the forms, names, and activities of the Lord, who is playing like an actor in the drama. Nor can they express such things, neither in their speculations nor in their words. हाँ, तो भाई भगवान का जो सीधा समय बोलते हैं कि भगवान का जो सृष्टि का कारण क्या है, ये कौन जान सकता नहीं है, कुतर्की लोग नहीं जान सकते. The foolish people can't understand why Lord is created. They don't have power. Lord will not reveal them. Lord will not reveal them. Prabhupada said the fruity worker or the gross materialist, mental speculator, they can't understand because they think the Lord's name, forms, activities is the product of the matter, and therefore they will always remain ignorant. They don't have any access because they are in ignorance. Janma karma cha me divyam. Lord's activities, everything is divya, but these people can't understand because they are in a mental platform. As stated in the Bhagavad Gita, the Lord is always in the transcendental position. Even he is within this material world. But ignorant men consider the Lord one of the great personalities of the world. And thus they are misled by the illusory energy. भारत में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, वो भारत का राष्ट्रपति था. उसने बोला कि वो भी भगवान भी एक ऐतिहासिक पुरुष है. But that person died actually. As a vegetable he died. His body became vegetable because he offended Lord Krishna. I can't mention the name. He was the Rashtrapati of Bharat. But he said Krishna is one of the personalities, great personality. And he is very famous on Bhagavad Gita. Considered very great orator of the Bhagavad Gita. But he died like a vegetable. Prabhupada mentions. He died like a vegetable. So these people are offended. They don't have access to the Lord's creation. Why the Lord creates? Then the Siddha Swami says, who can understand? Who can understand the purpose of creation? The next look, very wonderful, very nice. Saveda dhatu padavim parasya.
दुरंत वीर्यस्य रथांगपाने यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। ये सेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बाद आपको बेस्ट सेक्शन आने वाला है, उसी से हम एंड करेंगे। भागवतम का ग्लोरीज इसके बाद, ठीक है? इसका अर्थ पढ़िए। Only those who render unreserved, uninterrupted, favorable service unto the lotus feet of Lord Krishna, who carries the wheel of the chariot in his hand, can know the creator of the universe in his full glory, power, and transcendence. So Prabhupada says only the pure devotees can know the transcendental name, form, and the actions of the Lord Krishna, due to their being completely free from the reactions of the fruitive works and mental speculation. They render incessant service to the Lord spontaneously, without any reservation. Anya vilashita shunyam jnana karmadhyavanatam anukulen krishnanu anushilam bhakti uttama premanjana churita bhakti vilochanena santas sadaya dayesha vilokayanti yam shama sundar machindya guraswarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. So Prabhupada says ki not expecting anything, Lord guides them, tesham satata yuktanam bhajatam pratipurvakam, but the fruitive workers and the mental speculators are not qualified, they cannot understand. Only the in a special sloka kaisa dekhiye, bhajeta tatpada saroja gandham santatayanu vritya, without any gap, satatam kirtayanto mam yatantascha tadabrata. When nityam bhagavata sevaya, to Siddha Swami bolta nityam bhagavata seva means yes, at least not 24 hours every day. Nityam is regularly. At least you start regularly 1 hour. Somebody said, no, 24/7 every day, 365 days. No. He says Nityam means you fix time, half an hour, 1 hour, 2 hours every day. That is also called as a Nityam Bhagavata Sevaya. So here Santatam means, yes, you try to put your all energy, your activities toward Krishna. You work for Krishna, family for Krishna, everything for the pleasure of Krishna. So that is also called as a Satatam Kirtayanto Ma. Now what is the fruit? Now result of the glories. Now Sud Goswami is congratulating the Naimisharanya sages for asking such a wonderful question. Now he says, Ateha Dhanya Bhagavanta Itham. Yadva Sudeve Kilalokanathe Kurvanti Sarvatmak Atma Bhavam Nayatra Bhuya Parivarta Ugraha. Translation. Only by making such inquiries in this world can one be successful and perfectly cognizant. But for such inquiries invoke transcendental ecstatic love unto the Supreme Personality of Godhead, who is proprietor of all the universes and guarantee 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death. So he says ki because your inquiries are very great, by simply such inquiries, the living entities can be liberated from the material world. And therefore it's congratulating them. By such inquiries only the world can become fully perfect and cognizant. Because Prabhupada says in this shloka, Tadvad Visargo, in this material world there are only inquiries. Bajar mein bhav kya hai? Starting se Panchi bhi चिल्लाते रहते, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते, but all these questions have no value. Prabhupada says all these questions have what the value? No value. Because tadvag visargo janata ka viplo yasmin patishlokam apadhyavattyapi namani ananta seshon kidaniya shunmanti gayanti gidanti sadhava. कि बाबा भगवान बाकी का तो सब वायसम तीर्थ है, कौओं का तीर्थ है, द होली प्लेस फॉर द क्रोज. बिकॉज ऐसे इंक्वायरी से कुछ फायदा नहीं होने वाला. लेकिन भगवान और पूरे भागवतम में इंक्वायरी ही है, भगवान के बारे में इंक्वायरी और कुछ नहीं. भगवान के बारे में क्वेश्चन, भगवान के बारे में आंसर, दैट्स ऑल. इसलिए शौनक ऋषि मैं आपका धन्यवाद देता हूँ. क्या देता हूँ? धन्यवाद देता हूँ. फिर शौनक ने पूछा, बाबा
कि आप ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कौन सा शास्त्र बोल रहे हो, कोई अभूतपूर्व शास्त्र बोल हमको उत्तर में दे रहे हो क्या, जो हमने कभी सुना नहीं है? क्या क्या बता क्या रहे हो आप लोग? हमारे प्रश्नों का उत्तर क्या दे रहे हो? सब बताते कि मैं कौन सा शास्त्र बता रहा हूं, आप सुनिए। इदम भागवतम नाम, बोलिए। पुराणं ब्रह्म संहितम् पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम् उत्तम श्लोकचरितम् चकार भगवान ऋषिः चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्य अयनं महत्। धन्यं स्वस्य अयनं महत्। देखो, you have to read the entire purport of all upcoming shlokas. These all purports has to be read again and again, again and again. If you can digest these purports, our life is successful. लेकिन यहाँ पे अभी मुझे आज तो इसको समाप्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा नहीं। पर ये इतना इंटरेस्टिंग सेक्शन चालू हो रहा है, ये पूरा भागवतम का ग्लोरी। आई थिंक मुझे हाई नहीं करना चाहिए, अगली बार कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो अभी यहाँ पे वो बोलते कि श्रीमद् भागवतम इज ब्रह्म संहितम एज इक्विवेलेंट वेदा। वेदों को क्या गया? शब्द ब्रह्म। तो भागवतम कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, शब्द ब्रह्म है, ये श्रुति है। ये क्या है? श्रुति है ना। और इसका परपट को प्रभुपाद बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम इज अ लिटररी इनकार्नेशन ऑफ कृष्ण एंड देयरफॉर नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिम। Srimad Bhagavatam should be worshipped as respectfully as you worship the Lord. Thereby one can derive the ultimate blessings of the Lord through the careful and patient study. We can have all transcendental light of the Supreme Brahman Sri Krishna from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of the transparent spiritual master. इसलिए स्वरूप दामोदर ने कहा है कि भागवत पढ़ियार भागवत खाने। If you really want to get benefit of Bhagavatam, you have to hear from the Bhagavata person. Bhagavatam. One can derive from the study of Bhagavatam all the benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Supreme Lord. It carries with all the transcendental blessings of the Lord Sri Krishna that we can accept from his personal contact. इसलिए जितने भी पर्पट आप याद कीजिए, बार बार पढ़िए, इतना भागवतम का महिमा बताया। So much glories of Srimad Bhagavatam. But it cannot be heard from the professional reciter. If the people, they can hear it from professional reciter, but it will not touch their heart. It will not touch their heart. The life will not be transformed. मैंने भी 4th standard, 3rd standard, 5th standard में 7 इनका भागवत कथा सुना था। एक बहुत फेमस व्यक्ति है, लेकिन लाइफ का चेंज। आपको थोड़ा पायासित मिला होगा, लेकिन प्रभुपाद जी का एक छोटा किताब पढ़ा तो डेडिकेशन हो गई। ये होता है एक भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से सुनने से। जैसे भागवत कथा है तो बहुत होती है, लेकिन आपको उससे थोड़ा पायटी बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर वो पॉइजन होगा तो और डेंजर हो जाए। जैसे एक अच्छा आपके लिए स्वीट राइस बनाया, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा आपने बीज डाल के चला गया तो मृत्यु हो जाएंगे ना। तो उसी तरह से कभी कभी ये प्रोफेशनल रिसाइटर से सुनने से स्पिरिचुअल डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कोई अपसिद्धांत पकड़ लेगा। क्या पकड़ लेगा? अपसिद्धांत। और एक बार अपसिद्धांत पकड़ा तो छोड़ते नहीं लोग। अभी भी जगन्नाथपुर में जाइए, वहां पे हरिदास ठाकुर के समाधि में कितने लोग गए थे, बराबर है। वहां पे कौन सा मंत्र चलता है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। हरिदास ठाकुर ने कौन सा जप किया? हरे कृष्ण। लेकिन अब ये छोड़ेंगे नहीं। सिमिलरली हरिदास ठाकुर के सिद्ध बकुल में समाधि में यही मंत्र चलते रहता है, टोटो गोपीनाथ में, क्योंकि आपस संप्रदाय आ गए है ना। ये स्पिरिचुअल डेथ हो गया, उनका स्पिरिचुअल क्या हो गया? डेथ हो गया। क्लियर? प्रभुपाद का पॉइंट ऐसा सामने है, जिनका स्पिरिचुअल डेथ हो चुका है, धाम में हो गया, हमारे सामने एग्जाम्पल है ना। क्लियर? तो नेक्स्ट लोग तदिदं ग्राहयामास, बोलिए। सूतम आत्मवतां वरः सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समृद्धतम्।
बराबर है. Shri Vyasdeva delivered it to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all Vedic literatures and histories of the universe. इसमें तो हमको पूरा पढ़ना चाहिए. प्रभुपाद बोलते only hear from the pure devotees in the परंपरा. कि ये किससे पढ़ा है? कि व्यास देव ने शुकदेव गोस्वामी को दिया. अब ये पूरा परंपरा आ जाएगा. अगले श्लोकों में क्या आने वाला है? परंपरा. So प्रभुपाद जी बोलते कि शुकदेव गोस्वामी can see, and therefore he has given the stories from the entire Brahmanda, not only this planet, Earth planet, but he has in the Srimad Bhagavatam the historical facts selected from the histories of the different planets have been depicted. It is therefore accepted by all the spiritual authorities as a Mahapurana. The special significance of these histories is that they are all connected with the activities of the Lord in a different time and atmosphere. Srila Shukdev Goswami is the topmost personality of the spiritual realized soul, and he accepted this as a subject of studies from his father. There is no gain, however, in accepting the message of Bhagavatam from the unbelievers, atheists, and professional reciters who make a trade of Bhagavatam for laymen. It was delivered to Shukdev Goswami and he had nothing to do with Bhagavad business. इसलिए पूरा परपट पढ़ना चाहिए हमको. He did not have to maintain family expense by such a trade. Srimad Bhagavatam should therefore be received from the representative of Shukdev, who must be in the renounced order of life without family encumbrances. Milk is undoubtedly very good and nourishing, but when it is touched by the mouth of a snake, it is no longer nourishing. Rather, it becomes a source of death. Similarly, those who are not strictly in the Vaishnava discipline should not make a business of this Bhagavatam and become a cause of spiritual death for so many hearers. Don't become the cause of death for so many hearers. In the Bhagavad Gita, Lord says that the purpose of all Veda is to know Him. And Srimad Bhagavatam is Lord Krishna Himself in the form of recorded knowledge. Therefore, it is the cream of the all Veda. And it contains all the historical facts of all times in relation with Krishna. It is factually the essence of all history. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Such a wonderful, clear cut. क्या मैसेज है? क्लियर कट. अब एक श्लोक लेके हम बंद करेंगे. सतु संस्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परितं परमर्षिभिः. ट्रांसलेशन. Selection. Shukdev Goswami, the son of Vyasdev, in his turn delivered the Bhagavatam to the great Emperor Parikshit, who sat surrounded by the sages on the bank of the Ganges, awaiting death without taking food or drink. Again, Prabhupada mentioned about the transcendental chain of disciplic succession. How Maharaj, when Shukdev was reciting, who was present there? Suta was present. Correct. And here Prabhupada says that about disciplic succession. Where they were delivered the message to Shukdev, and from the Shukdev, Sud Goswami received the message. One should therefore receive the message of Bhagavatam from the Sud Goswami or from his representative and not from any irrelevant interpreter. And how to hear Bhagavatam? Emperor Parikshit received the information on his death in time, and he at once left his kingdom and family and sat down on the bank of the Ganges to fast till death. All the great sages, rishis, philosophers, mystics went there due to the imperial position. They offered many suggestions, and last it was settled that he would hear Bhagavatam from Shukdev. So Prabhupada talks about Sripad Shankaracharya. This Bhagavatam is not for Mayavadi. Because Mayavadi also talk about Bhagavatam. But he says that even Shankaracharya admitted that we should hear about Krishna. Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Muradam. This is the recommendation of all the great transcendentalists.
Shukdev Goswami had long ago stated that same truth, that at the end of the life one must remember Narayan. Because at the end of the life, Parikshit is hearing Bhagavatam. So Prabhupada says Shankaracharya also told the same thing. When Shankaracharya was going in Varanasi, he saw one Brahmin, very old Brahmin, his teeth are tattering, and he is reading the grammar. And he said, what you are doing? At that time, he composed Moha Mudgala Ashtakam. Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudamade. Samprade Sanni Hateka Nahi Rakshati Dukruta Karani. Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudamade. Very, very beautiful. Very beautiful. If we study now, it is very nice actually. One, since we have discussed in our temple many times. Shankaracharya is very great devotee of Lord. He also, but his follower will tell that Bhaja Govindam means Govinda was the name of his guru actually. So they says no, he is talking about worshipping the guru. No, he is talking about worshipping the Krishna. They don't accept it. ठीक है? So यहाँ पे किसी का प्रश्न है, सब लोग थके हो इसलिए यहीं पे रोक देंगे हम. आज एग्जाम दिया है ना, तो कोई प्रश्न है? अभी बचे हुए श्लोक काफी अच्छे हैं और नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी स्वीट. अभी ज्यादा फिलोसॉफी नहीं, जस्ट नेक्टर, नारद मुनि आविर्भाव. हाँ, आपका प्रश्न है? Question. Yes. Prabhuji, here we are talking about spiritual death. So what kind of spiritual death we are talking about? Actually वो भगवान का नाम तो ले रहे हैं, but नहीं, spiritual death means here Prabhupada is talking at different level. Spiritual death can be like you miss the ultimate destination, you go somewhere only. Because our destination is very clear, Golok Vrindavan, correct? So if you don't follow the Lord Chaitanya Parampara, you will go somewhere else only, na? Yes or no? And some people will talk nonsense thing, like Gopi Bhav Club. They will do the nonsense thing with their follower, and they will go to the hell only, na? Forget about the spiritual life. They will go to hell only. There are so many such people. They talk about Gopi Bhav and all, and they will finish. है ना? ये तो भी चैंटिंग कर रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स इनको कोई नरक नहीं जाने वाला है. इनको डेस्टिनेशन मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो हम चाहिए वो डेस्टिनेशन नहीं मिल सकता. बराबर है ना? हम जो डेस्टिनेशन चाहते हैं वो नहीं मिलेगा, उनको दूसरा मिलेगा. हाँ, और कुछ लोगों का तो वृंदावन में भी ऐसे लोग हैं जो गोपी भाव क्लब में है, पुरी में है, उनको क्या डेस्टिनेशन मिलने वाला? वो तो इलिसिट एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको कभी कुछ डेस्टिनेशन मिल ही नहीं सकता. करेक्ट? वो उसकी स्पिरिचुअल डेथ बोल रहे हैं. ठीक है, समझ गया? ये बोल. हाँ, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, वो एग्जाम के लिए पढ़ते पढ़ते बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कभी पूछने का मतलब किसको पूछने का? So we will keep one session for that ना. 100% will keep session. आप लिखे रखो, क्योंकि हम बाद में एक हमारा मोस्ट इस बार जल्दी हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे. ठीक है? 100% we will able to keep it. तो अभी हम रोके क्या, क्योंकि आप लोगों को काफी लेट हो चुका है, आज एग्जाम था. हाँ, ठीक है. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव भक्तों की जय. वृंदावन धाम की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. So tomorrow we have at 2:30 na? Yes, some quick announcements are there. Devotees can wait. Yes, Prabhuji, we will have tomorrow class from 2:30 p.m. So I can leave now. Yes, Prabhuji. Thank you. Hare Bol. Thank you so much, Prabhuji. Hare Bol. Thank you, Prabhu. Hare Krishna devotees, like few quick announcements regarding the closed book exam which we had today. So one I have put it in the group that please do keep the hard copy. So I got to know that few devotees, like the image was not clear. So from next time we'll have to make sure that the image when we are taking photos, it is clear. Because like it will have, devotees will have difficulty, the correction, whoever is correcting will have difficulty in correcting the paper. And later it's difficult to collect the copy and like manage things. Second,
should we decide now that from next time, what do we want? Do we want to extend the course and like not have class on that particular day, or have a 1 hour class? 1 hour class. Prabhuji, we can keep dedicated exam day and full focus of hearing day like separate. That is my opinion. Maybe you can take a poll for this. I am not seeing poll option on Zoom. So what I will do is is on WhatsApp. Yeah, I'll do it on WhatsApp, and I would request devotees, all devotees, to respond separately. Everybody can respond. And third thing, like please let me know if anyone has missed exam. Tomorrow I will be getting the data, like whoever, whatever they have received. And His Grace Shakshi Chitta Prabhu would be clarifying regarding like if you have missed exam, what will be the policy. But in short, Prabhuji had told me that if you are missing exam, it's not that you can write whenever you want. You can write it like next week, or like you can choose a date and time. So you can write exam only when next time BVRV is conducting it. And in general, it would be like, so Prabhuji was saying initially we may allow, but like after we have completed, say, first canto, so it will be only at the end of the cantos. So like, for example, there were 8-10 exams. So when the full canto is completed, that time like some 2-3 days slot would be there, where like whatever devotees have missed exams, so in those 2-3 days, you would be writing exams. So like if devotees are missing multiple exams, then they may have exams back to back. So we should try our best to write exam in the slot which is given. And for devotees who have missed today, there will be a common slot which will be announced by, like we will, I think devotees, Prabhuji will consult whoever has missed. So they will find a common slot for all of them, and devotees will have to write that time only. So there won't be any choice as such that you can choose, we want to write at this time. Prabhuji, I had one question. Yes. It's like, it's kind of maybe silly, but nowadays, most of the thing is done by typing. So in the live exam also, is it possible to type on Google Doc and maybe you can review, the persons can review it while it's being typed? It will be much better because sometimes, handwriting doesn't come out nice or, like that. Prabhuji, you can check with, or if you want me to check, like you can check with BVRV office. But what I feel is one thing is typing, it can be easily copy pasted. You don't know like who is typing or like who is, that is the whole issue. For purport, like taking something from the purport, or like you have like all ready-made. Yeah, that is there. Or maybe, I can even come to the BVRV and give exam on a laptop, Yes, but I don't know if that's possible. Yes. And regarding coming and writing exam in BVRV, so I came to know little late only that there is one form which has to be submitted beforehand. So I would share that form, and we will also we will decide in general devotees who want to. There can be exception at times for particular units, but in general these are the devotees who prefer to write in BVRV, and these are the list of devotees who prefer in general to write it online. We will have that clarity. And I personally also felt it's difficult to write. I mean, writing is easy, but to submit, it becomes very difficult. We took a lot of time. Yeah, what happens is they have to write so many things, but the time is less. It's like, that's why, typing is many times faster. That's why I was just asking. My opinion is same, Prabhu. It has happened in about 10, 15 years. When we have given exams, it's 10, 15, 20 years back, written exams. And now everybody is doing just typing. I'll just put a word, Prabhuji, but as of now, it seems difficult. This is my opinion. I'll just put a word to BVRV and check. Okay. Thank you, Prabhuji. Anything else? That's it from my side. So we'll end here. Thank you, Vaishnavas. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, Dandavad.